ऐसी सेम वॉच तो नहीं बनने वाली है इस दुनिया में। Oh my god. फर्स्ट बिगेस्ट परचेज Ever. It's cherry red. यस, ये जस्ट नहीं पहन पा रही तो दिल को दुख हो रहा है मेरे। तो जब एक चीज मेरा दिल नहीं जाती ना तो मेरी बहुत वो प्रॉब्लम है कि मुझे बहुत जिद्दी हो जाती हूँ। आई वॉन्ट अ बर्किन एंड मेरी माँ मुझे बर्किन गिफ्ट करने वाली है। हेलो Jazz, where are you? I've been waiting for you since so long, yaar. Look at the time, bro. Oh, hi. How have you been? Amazing and fantastic. Fantastic as always. I love your pink outfit though, and I hope you know that I've come to raid your closet today. तो चलें? Yes. Let's go. This is my main collection. This is Wall of Fame. Wall of Shoes. Fame also. ये है ना? रीवा रोड़ा की वॉल है। सब में रीवा सब रोड़ा boxes लिखा है. पे रीवा रोड़ा लिखा है, guys. I want to talk about the bling ones. I love this. So this is, बीच में बहुत ट्रेंड आया था ये Ooh. फैब्रिक का। Yes. People were wearing इसके फैब्रिक्स, कपड़े भी पहन रहे थे। And when I saw these heels, I had an outfit यही सेम फैब्रिक का। And I thought nothing better to pair it with these heels. But ये कितनी comfortable है? सच बताओ तो I think I've barely even worn it like twice. हाँ. Twice. The problem is कि ये मेरे ना टिकता नहीं है। This just falls off and then it's just like this on my leg. हाँ, because I was always used to think ये पहनते कैसे हो? ये स्टे कैसे करेगा? कैसे स्टे करेगा? हाँ. प्रैक्टिकलिटी नहीं है ना। But it's very nice. मुझे बहुत it goes well with outfits. If you're wearing a plain black dress, mini dress, उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। बहुत परफेक्ट है। एंड अगर मेरे को जानना है कि आपका कल सेट पे जाना है आपको, आपका बहुत अर्जेंट शूट है, सबसे कंफर्टेबल कौन सा है इसमें से पेयर? This one is the one I wear the most. Okay. Like you can quite literally see कि मैंने looks only कि मैंने कितना use किया है इसको। It's so comfortable that I had to buy a second pair in a different color. सोचो कितना ही comfortable है कि मैंने सेकंड पेयर इन लिटरली सेम डिजाइन, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। Got it. It's pretty hot in Bombay and a lot of these are luxury items. So how do you maintain that? I like to keep everything very clean. तो हम ओपन करते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, डे में विटामिन डी मिलता है रोज। मुझसे ज्यादा इनको विटामिन डी मिलता है गाइस। And this is my favorite pair. Okay. बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन पहन ही नहीं पाई। ऐसा क्यों? हम इसे निकालते हैं और हम इसकी स्टोरी जानते हैं। So this is the Christian Louboutin. इसका ऐसा कुछ था कि आपने कुछ ट्रेंड चल रहा था and that's why you bought them and now you can't wear them because इतना comfortable नहीं है। मुझे चाहिए था कि मुझे Christian Louboutin की heels चाहिए तो चाहिए। हाँ। मैंने ले ली। And I don't know why मैंने ऐसा साइज लिया जो अब मुझे आ ही नहीं रहा है। I literally love these, man. Not even a month later, 15 days later मेरा एक्सीडेंट हो गया था। Oh, okay. And मेरा I broke my toenail. Okay, ठीक है, इनका दिन आएगा जल्दी। It's not that कि मुझे regret नहीं हुआ, it's just नहीं पहन पा रही तो दिल को दुख हो रहा है मेरे। बाकी मुझे और भी आपकी हील्स की कहानियां सुननी है because there are a lot of pairs. I want to understand maybe your top 5. So top 5, Yes. I would say the ones I wear the most. One, this very blingy. It has a platform, so it's Yes. easier to wear. Second one is this. It's very comfortable and it's more of my vibes. I got this from I think some Bata or something. I don't know. Oh, okay. मतलब कहीं पे भी मुझे जाना है और मुझे पता है कि मुझे वहाँ पे बहुत ज्यादा घंटे लगने वाले हैं तो I'm going to wear these. Wear these. Probably my most favorite pair currently is these. The Dior. The Christian Dior new edition. New edition. Yes. So आज से 5 साल पहले I used to wear these heels जब TikTok का टाइम था। These are what 7-8 inches? Yeah, I used to wear these heels कि तब I was a little shorter, no? मेरा ध्यान बॉक्सेस पे जा रहा है, उसमें क्या है? This is the recent collection, recently added. Okay, so we are having An a proper unboxing. unboxing Yes, video. अभी तक Okay. किसी ने नहीं देखा है। Exclusively for मैंने Hottest पहना Live. भी नहीं है अभी तक। I love these. And see heels भी छोटी। Let's go to your closet. Yes, because ये तो चलता रहेगा, सारे पेयर्स की कहानियां बताने जाऊंगी तो। Please come inside. Oh, this is your room. Yes, and now let's go into my walk-in wardrobe. Okay. So there's a magically black door. क्या है इस दरवाजे के पीछे? आधी जनता का question. So, Oh my God. This is so colorful. I love it.
मुझे जल्दी जल्दी से सबकी स्टोरीज बताओ. I want to know about your sarees and everything. This is a sari that my nani got for me from Okay. Ujjain. Okay. Whenever she's going or I'm going, we love getting saris from there because they have literally the perfect saris. I have a lot of saris, a lot of Indian wear because most of this is my mom's. Okay. This is my mom's sari. This has just been passed on to me. Look at this amazing royal blue with all of this handwork. This is so beautiful. And I think आपने इसको रखा भी बहुत अच्छे से, वरना usually embroidery black होने का भी डर होता है. Yes, I think she wore it before marriage, so it should be 25 years. Oh purani. my god. This is so cute. Okay, so this is a shrug. Okay. Mermaid. Mermaid shrug. So मैंने एक ऐसा look किया था तो उसके लिए वो shrug था. हाँ. Disco. This is like a mermaid look types. Wow. वाला. So this is the corset and this is the pants. ये मैंने New Year पे पहना था. And where do you usually shop from? Are you somebody who also hits the streets and shops from? Yes, of course. I Okay. have done that many times and usually तो मैं fabric लेके stitch करवाती हूँ because I अच्छा. want everything to be different. But I have done that many times. Like you can see the suits and all. तो you can just see बहुत कुछ मैंने ऐसा लिया हुआ है. You can see उधर बहुत comfy कपड़े भी मिलते हैं. Yeah, ये तो बात है, और सस्ते प्राइस में, so you can wear it Exactly. more often also. So this one I saw Rocky और रानी के premiere के time पे, Yes. promotions के time पे. हाँ. And then I was like, bro, I need this. It's a famous Kasata sari. Wow, the Manish Kasata Malhotra. sari. Yes. I just wanted it specially made for myself. तो मैंने बनवाई. It's a little different color than that. Yeah, मैंने इसको क्योंकि डाई करवा के पूरा बनवाया है. पूरा So shaded. मैंने different shades करवाया, not the exact color, but हाँ. ये अलग है थोड़ा. But yeah, Inspired from Rocky inspired Aur है. है. I wear my outfits only once. Riva, tell me, आपके पूरे closet में से सबसे ज्यादा Gen Z चीज क्या है? These Okay. Raven glasses. Okay. So these are the Meta Ray-Ban ones. Oh. My friend gifted me these. Haha, my best friend gifted me these. So you can actually shoot in this. Yes, I can. So what happened was when it was launched, तब I think India में कुछ 5-6 pieces ही आए थे Yes. when it was fresh launched. Yeah. So he got it and literally पता चला कि वो किसी से लड़ाई करके ये लेके आए because it was क्योंकि ये limited थे तब when it भाई- came to India. Oh, lovely. सबसे ज्यादा expensive वाला कौन सा है इसमें से? And सबसे सस्ता also. सबसे ज़्यादा expensive is my recent edition, that's Cartier. It is so pretty. I love the fact that it's dual toned. मेरा पता है क्या है? Whenever I'm buying something ना, I want to buy something which is different. So all my glasses you'll see सबका frame अलग होगा, Okay. सबका सब कुछ अलग होगा because मुझे similar पसंद नहीं है लेना because then it's just कि आप फिर ऐसा हो जाता है कि नहीं ऐसा तो already है तो Yeah. it gets difficult to choose then. But बॉम्बे में कौन से फेवरेट स्पॉट्स है, या इंडिया इन जनरल आपके कोई स्पॉट्स है जहाँ पे आप जाते हो? यार सरोजनी तो nowadays is too crowded. मैं तो कितने टाइम से नहीं गई हूँ. Yeah. But I've been to Hill Road. I like Hill Road personally. So the other shades that I have this is one Gucci pair that I have. It's like like a cat eye, but I Similar. really like the fact that इसमें side में ऐसा cute Yeah. से G है and it's very like I really like this one on very you. sleek. Yes. So like मैं ऐसे भी देख सकती हूँ, ऐसे भी देख सकती हूँ. किसी को अगर ऐसे दिखानी है आंखें तो ऐसे भी दिखा सकती हूँ. And then I have these Miu Miu glasses. Okay. This is also very Gen Z thing that I Yeah. have because this is so in trend right now. This is so Pinterest coded, I must Yeah, say. this is very Pinterest coded. Yeah. I love the box. भाई pink color Pink का color. box दिया है मुझे, मैं तो उधर ही पिघल गई थी ये लेते टाइम. Beautiful, beautiful. I love them. As you can see मेरे बहुत ज़्यादा यहाँ पे glasses की collection है. Yes. Then ये मेरा watch का box है which is empty क्योंकि मैंने watch पहन रखी है. Okay. This was my first biggest purchase ever. Ever. मेरी मम्मी की सांसें ऐसे ऐसे हो गई थी, धक धक हो गई थी ये लेते टाइम. Okay. Because हम लोग गए थे सिर्फ एक बुक करने watch. Okay. And this is very rare that उनके पास स्टोर पे अवेलेबल हो. And then they were like, you know what, ma'am? I think we have something for you. I was Okay. like, and then they showed me this stone that has been used. Yeah. Is black mother of pearl, Pearl. which is so rare. मतलब ऐसी सेम वॉच तो नहीं बनने वाली है इस दुनिया में. So one of a kind है, रीवा One की of a तरह. kind. See, टहलते टहलते कि चलो एक बुक कर लेते हैं तो Rolex. रोलेक्स आ गई. और फिर उसी मिल दिन गई. आई. एंड भाई ऐसा मतलब ऐसा पीयर प्रेशर में मैं जिंदगी में कभी नहीं रही होंगी कि अभी के अभी टेक इट और लीव इट. इट वाज दैट सिचुएशन. But how do you make such decisions? मैं तो फिर 2-3 दिन तक सो नहीं पाती. मुझे ना Yeah. एक्चुअली बहुत पसंद आ गई थी. Yes. तो जब एक चीज मेरा दिल ले जाती है ना तो मेरी बहुत वो प्रॉब्लम है कि मुझे बहुत जिद्दी हो जाती हूँ मैं. फिर मेरे अंदर का दिल्ली बाहर आ जाता है. बाहर आ जाता है.
You didn't ask about this? No, I was looking at it. क्या I है? noticed you're looking at it and I was like कि पूछना है तो पूछ सकते हो. क्या है ये तिजोरी जैसी चीज में? इसके अंदर मैंने मेरी scripts रखी हुई हैं. Wow. सारी of the projects that I'm doing, so I cannot show that yet. सारे राज उसमें हैं. सारे राज उसमें हैं because this box has been made according to Vastu apparently. Okay. So the name is Pitch to Get Rich Now. So वो वैसा ही है कि if you put it in this, मतलब it's a manifestation type of thing from this box. Oh, very तो ऐसा मुझे interesting. पूरा इसके साथ जो आया था ना तो उन्होंने पूरा लिख के भेजा था. I was like, wow. And I also hear that you have a massive perfume collection. Oh yes. A little so, birdie told me. Yes, I know. But for that एक चीज है. Okay. आपको 5 मिनट वॉक करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे दूसरे घर पे है. So I'm excited can we for. go there, guys? चलना है वहाँ पे? चलो फिर. चलते हैं. Let me take you. So welcome. I hope the walk wasn't too long for you. Not at all. I mean, so this is मेरा छोटा सा closet जो Okay. मैंने बना रखा है. Yes. And this is exclusive because ये recently बना है. Hmm. So nobody has seen it yet. I feel very lucky and privileged right now, and I'm very excited to see your wardrobe here. So this is my bags collection. Oh wow. As you can see, I have LV, I have Goyard, I have Coach, I have Gucci, LV. And you can tell I have so much LV, I'm obsessed with it. And I'm following the new trend Gen Z हो यार. तो cherry red, cherry सबको पसंद है. Yes. तो ये वाला मुझे बहुत टाइम लगा था फाइंड करने में because look at it, it's so cute. It's very cute. पूरा cherries है and then I have this also. It's so cute and इसको मुझे इतना टाइम इससे लगा because ये available नहीं था. So it was quite an interesting find, I must say. Then this LV bag I have. So I'm not a fan of totes. Totes, okay. So that's why I don't have much of a tote collection. I'm a fan of small bags. Like Yeah. this one was recently spotted by many people. Yes. But इसमें ऐसा है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए, इसमें कुछ आता तो है नहीं. क्या डालते इसमें कुछ? मेन चीज आ रही है सबसे ज्यादा पैसे. I could see there's a micro bag there. And I want to know, why did you buy this? What was This the story? is the same question I ask myself कि मैंने ये क्यों खरीदा. मतलब ऐसा है कि अगर कुछ नहीं लेके जाना मुझे तो कुछ ना से कुछ सही वाला फीलिंग है ये. हाँ, मतलब क्या ही आएगा इसमें. एयरपोर्ट केस आता है? नहीं आता. But I think this is more like an airport case. Yes, yes. इसमें मेरे पूरे एयरपोर्ट्स फिट होते हैं. That's it. Okay, very interesting find, I must say. You have 2 Goyards, I see. Yeah, 3. Three. So 2 here Oh yes, there's a third there. and 1 here. And Okay. Goyard के अंदर हमने गुच्ची रखा हुआ है. But ये संभालने का तरीका ऐसा कुछ कि सिर्फ रख दिया क्योंकि Bombay weather is as such, you have to maintain your bags also very well. Oh my god. So हाँ. मैंने ये इसीलिए ही बनाया है because bags को आप बंद करके नहीं रख सकते. Especially in Bombay weather, humidity होती है, कितना कुछ होता है तो आप maintain ही नहीं कर सकते. Yes. So to maintain it from that's why I made this specially for my bags. क्योंकि इसको दिन में यहाँ पे सीधा sunlight आती है तो I can just open it and bags को at least air and sunlight Air and मिलती है. sunlight, which is a very good hack. And I see that you have an extensive perfume collection too. So I love fragrances. I am a huge fan of, ऐसा मुझे compliment बहुत अच्छा लगता है when somebody is telling me that you smell so good. And I'm like, yes, I know. So इसलिए I have a lot of collection. Prada, then this one is my favorite actually. Which I is love that this one Chanel. perfume that defines Riva. I think I really love this one, Dior. Okay. It's the best. Should I say it or should I not say it? It lasts longer than some relationships. Oh my god. And I have Gucci Flora, then Tears from the Moon. This also is really amazing. Yeah. Tears from the Moon, and literally, iska to I think this is my 4th, 5th bottle. I have only 2 here. ये भी खत्म होने वाली है. And how often do you invest in both bags and perfume? Mostly ना, because मैं थोड़ी सी बोल सकते हैं कि थोड़ी सी तो कंजूस हूँ. अंदर होता है ना okay. थोड़ा सा कि भाई नहीं इतना नहीं स्पेंड करना अभी. But मुझे ना जब कुछ चीज पसंद आ जाती है फिर वो प्रॉब्लम भी है मेरे साथ कि मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ. एक बार मन बन गया तो ले लेती हूँ. तो ले लेते. कोई ऐसा वो नहीं है कि अभी मैंने ये लिया अभी नहीं ऐसा कुछ नहीं है. This is the OG classic. The Yes. classic. This was my first perfume. And you can see मैंने कितना कम यूज किया है. I have recently got the black YSL also Okay. because मुझे ना male fragrances ज्यादा पसंद है. That's true. That's Floral more थोड़ी- stronger, no? Yeah. Floral से ज़्यादा I go that side, so that's why you can see all these also. I have more stronger fragrances. I have. Yes, you'll you see. do. Voila! More bags. There are more bags. Oh my god, I'll faint here. बस गिरना मत. मुझे यहीं से मुझे लेके जाना पड़ेगा कहीं. Bhai, my god. I have, yes.
इट्स माय न्यूएस्ट कलेक्शन. मेरी नानी ने गिफ्ट किया है मेरे बर्थडे पे. Oh my god, it's properly packed. It's cherry red. Yes. Oh my god. So पता है beautiful. इसकी क्रेजीएस्ट स्टोरी है. हाँ. क्रेजीएस्ट. आई डिडंट नो व्हाट आई वांटेड टू बाय. सबको बस यही था कि भाई बर्थडे गिफ्ट ले लो. मैंने नहीं लिया. 2 बैग्स में मैं इतना कंफ्यूज थी. आई आस्क्ड एवरीबॉडी बट देन इन द एंड आई बॉट दिस वन बिकॉज़ दिस वाज मोर प्रैक्टिकल. इसलिए अभी तक पैक है क्योंकि ये सबसे मतलब it's not even been a month since I bought this. I can see that it's prim proper packed. But ये बहुत interesting बात है. मुझे आप बताओ कि has your mood changed about fashion and style? Like now you're looking at more practical things. Were you always like this? I have always been more practical in life because you have to think for the long run ना. Okay. आप जल्दी जल्दी में कुछ करके मतलब स्मॉल डिसीजंस लेके फटाफट डिसीजंस डोंट हेल्प यू इन द एंड. ऐसा है मुझे कि एक बार जो चीज पसंद आ जाती है मैं ले लेती हूँ. वो थोड़ा है मेरा. बट देन अगेन आई स्टिल लुक एट द फैक्ट दैट will I use it? Yes. On that note, I want to ask you, what is your dream bag? All the girlies will relate with me for this. It's a Birkin. I want a Birkin and मेरी माँ मुझे Birkin gift करने वाली है. Auntie is looking at us from there. दोनों को घूर रही हैं वो. But we are manifesting that for you. The recent thing I bought from LV because my nani loves shawls. Yes. So I got this pretty pink color. So beautiful. But are you into shawls? Because you know what, the new Gen Z market is suddenly into pashminas, jeans and top and pashmina. My nani has always been into shawls. तो इसलिए हमने ये शॉल ली थी. ये मेरी नानी की पसंद. नानी के लिए छोटा तो ये सा. नानी के लिए पसंद. Your closet is so Gen Z. It's so Gen Z. I can see a lot of cardigans also, which I don't know how you're using in Bombay. This is for travel purpose. Okay. मतलब it's so chic. Yeah. It's so bougie. Then this is one that I bought from Chanel. I love it. This is one of the only clothing that I bought from a luxury brand क्योंकि मेरे को ऐसा है कि it's not practical. So this jacket only she liked it. तो इसलिए हमने ली है. When you start earning at also a very early age, what smart purchase choices are you making? So bags का भी मेरे पास ये है कि मुझे bags collect करने हैं for my future self. Yes. Like my first ever Gucci bag. Now it's not available anywhere. Yeah. So it's an investment only because Yes. now everybody wants this bag. Yes. For the future generation also it's there, no? Of course, of course. You can just pass it on. As you know, this show is called HF Raids, so I cannot let you go without giving us something from your wardrobe for your fans. मैं ऐसा कुछ देना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत मीन करता है. Yes. So I have these earrings. Okay. That I got from the set of Power of Patch. Okay. These are the ones. रखा Cartier के pouch में क्योंकि it's as precious as that for me. Oh wow, these are so pretty. Thank you so much मेरा पावर ऑफ 5 परिवार. यस, बेला के बारे में बताओ आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा. अभी तो बहुत सारे कैरेक्टर्स आने बाकी हैं. मैनिफेस्ट कर रहे हैं बर्किन के साथ. So तब तक सबको बाय बोल दे. बाय गाइस, लव यू. थैंक यू सो मच.